Hello guys, welcome to our channel Rapid Steno, India's #1 best shorthand dictation and transcription software। इस पे आप डिक्टेशन लेके किसी भी स्पीड में 80 से 90 100 टू 125 स्पीड में और कस्टम टाइमर के साथ इस पे ऑडियो के साथ डिक्टेशन लेके आप ट्रांसक्राइब कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर आपकी कॉपी को इंस्टेंटली चेक करेगा और मिस्टेक डिटेल समरी रिपोर्ट देगा आपको कितने टाइप की मिस्टेक की है आपने, पंचुएशन, कैपिटल, डिफरेंट। और सारे एग्जाम्स के डिक्टेशंस इस सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे वो कैलाश चंद्रा की प्रैक्टिस कर रहे हो आप, प्रोग्रेसिव, कोर्ट डिक्टेशन, लीगल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिलेटेड एनी एग्जाम। 3, 2, 1 स्टार्ट। The recent developments in the economic sector have raised pertinent questions regarding the sustainability of current policies. Experts have expressed concerns about the long-term implications of such strategies. While immediate benefits are evident, the potential risks associated with these approaches cannot be overlooked. Policymakers are urged to adopt a cautious stance, weighing both short-term gains and future uncertainties carefully. In the realm of international trade, negotiations have been ongoing to establish more equitable agreements. However, challenges persist as nations strive to balance their economic interests with global expectations. The complexity of these discussions underscores the need for comprehensive analysis and careful consideration. Experts recommend adopting transparent mechanisms that ensure fairness while promoting mutual growth. Domestically, the government's initiatives aimed at fostering innovation have garnered attention. Programs designed to support startups and encourage research and development are being implemented across various sectors. These efforts are anticipated to stimulate economic growth and enhance competitiveness. Collaboration between private enterprises, academic institutions, and government bodies is essential to maximize the benefits of such initiatives. Environmental sustainability remains a focal point in policy making. Legislative measures are being introduced to mitigate the adverse effects of industrial activities on natural resources. While progress is being made, the challenge lies in ensuring that economic development does not come at the expense of ecological balance. Public awareness campaigns and stricter enforcement of regulations are considered vital for long-term environmental protection. Furthermore, the social dimension of policy implementation cannot be ignored. Efforts to improve education, healthcare, and employment opportunities are crucial in ensuring inclusive growth. By addressing the needs of marginalized communities and fostering equal access to resources, the government aims to create a more balanced society. Stakeholders must work together to integrate social, economic, and environmental objectives, creating a holistic framework that benefits both present and future generations. In conclusion, while strides are being made in various sectors, it is imperative that policies are crafted with foresight and responsibility. Stop. आई होप आप लोगों ने इस डिक्टेशन को लिख लिया होगा। अब आपको सिर्फ इस डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करना है रैपिड स्टेनो के सॉफ्टवेयर पे लॉगिन करके। डिक्टेशन को सर्च करना है कैटेगरी के बेस पे एंड उसके बाद टॉपिक को सर्च करके स्टार्ट कर देना है
और जैसे ही आप ट्रांसक्राइब करेंगे सॉफ्टवेयर कॉपी चेक करेगा आपकी और आपको डिटेल मिस्टेक एनालिसिस देगा समरी के फॉर्म में। पंचुएशन मिस्टेक अलग, कैपिटल मिस्टेक्स को अलग दिखाएगा, एक्स्ट्रा वर्ड्स, मिसिंग वर्ड्स, और इसकी एक रिपोर्ट भी बनेगी जो आप डाउनलोड करके शेयर भी कर सकते हैं। और उस रिपोर्ट में सब रहेगा, ओरिजिनल टेक्स्ट, यूजर टाइप टेक्स्ट, कंपैरिजन और डिटेल मिस्टेक समरी पूरी।